mnemonic symptoms. Sorry for the I was in the meeting. Screen is visible to you. First of all, we have to follow the steps. Those who have done, please write down to check. Step number 4. Fill the survey form. Are you new to Oracle application extension? Click on yes. Do you plan to use this workspace for a university class training? Click on yes and then go to the next. Am I audible properly? Someone can respond. Hello. Okay, let me rejoin and continue with the steps. Let me rejoin. Now, am I audible properly? Okay, fine. So first, we have to follow the steps to create the Apex account. So let me tell you why we require this account. Throughout your DBMS subject, we are going to perform all the practicals on this platform. This is provided by the Oracle company, and their server, they will allot some space to perform our practical and to store our database. So for that we need to create this workspace. So after filling this step number 4 survey form, then write appropriate text in the text area. Why are you requesting this service? So you can write teaching learning process, learning purpose, anything. Then you can go for the next one. You will find the one agreement. Read that agreement and click on I accept the terms and click on next. Click on next. Then after last confirmation page, you will find first name, last name, your email ID, your workspace. Generally, in a workspace, you can type anything, but for the uniqueness, we are writing here your name underscore your surname. So all of us will be at same page, right? Then submit request. Whenever you click on submit request, you will find workspace requested, and after requesting this one, you will get the email from the Oracle on your institute email ID only. So that's why I told you use your institute email ID, right? After receiving that email on an institute email ID, you will find this detailing your mail, workspace, username, environment, and one button create workspace. So whenever you click on create workspace, you will be redirected to the continue to sign in screen. I hope all of you are with me at same page. Fine. Okay. Then after click on continue to sign in the screen. Then it will ask to change your password, set your new password.
जो आप याद रख सको ऐसा पासवर्ड रखना. This is individual account, so I will not get any single password or any single notification for this account. So don't ask me your password in future. After that, you will find this type of window. How many of you get this screen, this type of screen? How many of you get? Yes, Harshdeep, you raised the hand. Just tell me. What's Sir, your I got the experience? screen. Okay, fine. Good. If you stuck anywhere, any students, then please let me know so I can help you. Share your screen. Okay, done. If you have done, then put a message into a chat so I can get the idea. Out of these 15 students, how many of you have done? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 students, 8, 9, 9. This is the basic and mandatory steps, because without this account we cannot perform even single query, single practical. Can anyone tell me this Apex manual is visible in your e-content or not? Is it visible? Okay, Ruti. I think some one student posted the message. I am not access. Sir, I am on step number 9. Can you please say how to fill username? Step number 9. Okay, no issue. No required to fill that thing. It is already filled by you in a previous steps. This is the step number 9. This information will get on your email ID. Right, Dev? After confirmation, you will get one email. In that email, you will find this screen. Step number 9. Workspace, username and environment. And you have entered your workspace in a step number 3. Your name underscore your surname. Okay, got it? Okay. I'm giving you a 2 to 3 minutes more, so all of you can complete the steps. Then after, I'm going to introduce few fundamentals. Don't worry, I will explain how to run the query, how to access this Apex account step by step. First, we will see the fundamental. Then you are able to understood that thing. What should be entered in that text area, and what is the working of that Apex? Ritvik is asking, sir, Apex is like compiler. Yes, you can. In Oracle server, it will create some space, workspace, to allow to store whatever work we are doing in this account. It will be stored in their server. So from anywhere, as I told you yesterday, what are the advantage of centralized database? File based का नहीं, centralized database का advantage क्या है? You can access it from anywhere. So you can access this Apex account, and whatever we will create
the tables and database, it will be accessed from anywhere, from any device. आप घर से भी कर सकते हो, फिजिकल क्लास स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से भी कर सकते हो। सपोज यू सपोज आप advantage of centralized database, remember this thing. Tables, so keep patience guys, I will explain each and everything, what we are going to store, what what the, what type of data types we have, everything I will explain, and how it will be stored. There are some commands. First, uh, you complete these steps and get this step number 12. That's it. I will be back within 1 or 2 minutes to complete all the steps. Sir, I hope all of you have finished and done this, right? sir, Yes. Great. sir, there should be a mail coming in our email ID, institute email ID. Yes. If you have made the mistake Um, uh, writing a no, no, institute ID, then you will no, not sir. receive. No, Okay, sir. then That's then then check the spam folder once. If not, then you should wait. Sometimes it will immediately send the mail. Sometimes it will take the time. No issue. Rohit, uh, in today's lab, we do not require that account. Later on, you complete all these steps. If you stuck anywhere, please let me know. In our next lab, I will give the solution. Okay, right? So right now, I am stopping this screen and I am sharing one PPT. First, we will see the fundamentals.
Okay. First of all, as you know, what is database? What are the application of database? Already we have discussed in a lecture part. Let me give you one a small example. If we want to stores, if you want to store some data of student, then on your desktop, then what will be the procedure? First, we will click on Excel file. We will generate the new Excel file, that is the create Excel file. Then after, we will type that information, column name, row 1, row 2, row 3, like roll number 1 ABC, roll number 2 XYZ, roll number 3 blah blah blah. So कॉलम नेम आपकी क्या हुई? रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम. उसमें डेटा हमने फिलअप कर दिया. दैट इज योर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा. Remember all these steps. Whatever I am saying, it's not a useless. It will be correlate with some topics. So ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ तो सर रिपीट 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 कर रहे हैं तो वो कहीं पे नहीं, वो पूरा कोरिलेट होगा. सो दिस इज द मैनिपुलेशन. आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो ए बी सी, सो उसमें आपने मिस्टेक कर दिया, ए कैपिटल डाल दिया. इफ यू वांट टू चेंज इट, देन सिंपली आप क्या कर रहे हो? उस सेल में जा रहे हो और अपडेट कर रहे हो, राइट? सो दैट इज द अपडेशन. तो मैनिपुलेशन में सब कुछ आ जाता है, इंसर्शन, अपडेशन. ठीक है. अगर आपको उस सेल में कुछ कर डिलीट कर देनी हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो. ठीक है. सो दिस ऑल आर दी प्रोसीजर. सो एंटायर शीट विल बी कंसिडर एज अ डेटाबेस. आप एक्सेल शीट बोल रहे हो, उसको डेटाबेस बोल सकते हो, क्योंकि दैट इज द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस? लॉजिकली रिलेटेड डेटा. तो ये लॉजिकली रिलेटेड डेटा हमने एक्सेल शीट में डाला, ये सिंपल हो गया. नाउ to implement that thing, we have a SQL, that is the structured query language. SQL, that is the structured query language. Now what is it? It is nothing but one standard set of command, one standard set of commands. Why we require these commands? To deal with the database, or we can say that to communicate with the database, we require a command. जैसे हमने एक्सेल शीट कैसे बना ली? राइट क्लिक करके उसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो हम सीधा कीबोर्ड से इंसर्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ फॉर्मूलाज, इफ यू नो द एक्सेल शीट एक्सेल फॉर्मूलाज वेरी वेल, देन इट विल हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. फॉर्मूला आप जैसे सेट करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा. तो फॉर्मूला क्या है? कमांड ही है ना. फॉर एग्जांपल काउंट, इफ, ऐड, सम, conditional formatting, all this thing is nothing but a set of commands. So SQL में से specific commands हम learn करेंगे. By using that command, we are going to create the database, create the tables, and then we will insert the data. We can update the data, we can rename the data, everything we can do. So first of all, SQL is nothing but a set of command. One more important thing, SQL is a non-procedural language. SQL is the non-procedural language. There are mainly two type of language: procedural or non-procedural. Procedural, it means you need to write the steps, you need to write the process. In a non-procedural, there is no need to write any steps. Simply, you can write whatever you want. It means what data you want, that you need to write. कैसे, वो नहीं लिखना है. ठीक है. सो आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा कि क्या डेटा चाहिए. तो क्या डेटा चाहिए वो लिखने के लिए सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो भी लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5 कलर है, मैं उसमें से बोलूँ कि सिलेक्ट एनी वन कलर. सो तो आप समझ गए ना कि 5 में से एक कलर सिलेक्ट करना है. सिमिलर वे डेटाबेस में पूरा डेटा है, उसमें से कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. फॉर एग्जांपल
in our batch, I want to know how many male students are there, how many boys are there. So simply, I will write select gender is equals to male, right? वो आपको समझ में आ गया? तो select is one command. कैसे कैसे कर फेच करना है वो नॉन प्रोसीजर में नहीं करना है, ठीक है? These all are the characteristic of SQL. It is very easy to learn and use. Whenever we have a large amount of data, at that time it will be easy to fetch or retrieve the data. It is non-procedural, as I discussed, and last fourth one is the most important. SQL, first let me read. SQL can be linked to most of other high-level languages that makes it first choice for the database programmers. Now, why this one is the most important point? Because many of you are considering this is the subject for third semester, so we have to pass it, right? This is not like that. Compulsory, you have to learn the subject carefully. Why? In higher semester, you are going to develop some project as a part of curriculum, project subject. ठीक है, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट में, कहीं पे भी. और आफ्टर ग्रेजुएशन, सपोज यू विल बी अ डेवलपर, आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या फिर कोई भी टूल होगा, उसके अंदर आपको डेटा बेस की हेल्प चाहिए चाहिए चाहिए. Without database you cannot go ahead. So that's why you need to learn these basics. Now, mm, in this semester we are not going to learn that thing how it will be uh, implemented in particular language. That you will learn in that particular language, but fundamentals we are going to learn here. For example, Java. In a Java you will learn Java database connectivity. In every language you will learn database connectivity. Concept is database connectivity. So first you will learn the basic, how you can retrieve the data, how you can create the table, how you can rename these, all these basic commands fundamentals you will learn in this semester. And this concept you will use in a particular language. That connectivity you will learn in particular programming language. Someone raise the hand. Yes, raise. You Sir, raise the hand. Yes. sir, I have one doubt related to this subject. Yes, Nandan. Sir, can we make our career in this subject, or this subject is just for learning purpose only? As a That I told you now. In every project you need a database. For example, let me. I got your point. Let me give one simple example. Directly, can you know 51 number? But obvious no. You need to learn first 1 and 5, right? Similar way, directly you can go. You cannot go for the project. Yes, if you know PHP, Java, or whatever language, you can develop the project. But without database connectivity, you cannot store anything. I will give you more examples. Don't worry. Without database connectivity, you cannot store anything. For okay, it example, means that database is required in each and everything, right? yes, Okay. यस. जैसे आपको 1 to 9 कंपलसरी सीखना था LKG HKG में, A to Z सीखना था. सिमिलर वे आपको ये सब्जेक्ट के जो भी फंडामेंटल्स है वो याद रखने हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में जब डेटाबेस कनेक्टिविटी आएगी या फिर जब डेवलपिंग में आप जाएंगे, कोई भी कंपनी में आप कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, तब उसमें कनेक्टिविटी तो चाहिए. ओके, आई थिंक did you attend the yesterday's class, Nandan? Yes, sir. Okay, what are the application of DBMS? Do you know?
like if we talk about like social media, like suppose if we want to store some post ओके, from student. अगर आप कल के क्लास में थे तो आज आज आपका ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट कर रहा है कि आप मेंटली प्रेजेंट थे कि नहीं थे. लेट मी क्लियर अगेन दैट थिंग. कल हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस, कहाँ कहाँ यूज होता है. मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, तो आप सब ने बोला था एवरीवेयर. एवरीवेयर इट मीन्स एवरीवेयर. आप आपका ही एग्जांपल ले लो. आप पहले मोबाइल में क्या करते हो, पैटर्न लॉक रखते हो या फिर पिन लॉक रखते हो, जो भी है. तो वो कहाँ स्टोर होता है, बैकएंड में, डेटाबेस में स्टोर होता है. अगर डेटाबेस नहीं होता तो आपका स्टोर कहाँ होता और मैच कहाँ होता, राइट? Yeah, sir. ठीक है, तो मैच ही नहीं होता तो आप तो वन टाइम हो गया ना. ऐसा नहीं है. आपके आप जो यूजर नेम पासवर्ड जो भी डाल रहे हैं वो कहाँ मैच हो रहा है, आपके डेटाबेस के साथ. अगर वो मैच हो गया देन एंड देन यू आर अलाउड टू एक्सेस दैट एप्लीकेशन, मोबाइल फोन और वेबसाइट और ईमेल आईडी और व्हाटएवर. if it is not matched with your database then simply denied. बट उसके लिए कंपैरिजन करने के लिए डेटाबेस में कुछ स्टोर तो होना चाहिए ना पहले से. so that's why I waste or we spent most of time on application of DBMS. And again I am telling all of you, not to Nandan only, in our first chapter introduction of DBMS it requires only 1 hour for me. If I want to just go through the slides then it requires only 1 hour, not more than 1 hour. But I will not do that thing. I will ask each and every students what are the application, what is the purpose और इसका क्या मतलब है, ताकि आपको पता चले रियल लाइफ एग्जांपल से आप कितना कर सकते हो ये सब्जेक्ट लर्न. क्योंकि डेटाबेस एक ऐसी चीज है उसको हम छोड़ ही नहीं सकते. It is like a shadow everywhere around us. डेटाबेस सब कुछ सब जगह है. फॉर एग्जांपल गूगल का ही ले लो. आप गूगल में कुछ भी टाइप करते हो व्हाट इज डीबीएमएस, तो आंसर कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? चैट बॉक्स तो है नहीं. वो गूगल के सर्वर में बहुत सारे आंसर स्टोर्ड हो गए ना, तो वो डेटाबेस ही हुआ. ठीक है. फिर मैंने आपको कल एक लाइव एग्जांपल भी दिया था. लेट मी रिकॉल दैट थिंग. TC2 की फाइल ओपन की थी, एक्सेल सीट पूरी, वो डेटा था. अगर उसमें से मुझे TFW के इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो पूरे डेटाबेस में से मैं फिल्टर लगा के वो मिल सकता हूँ वो, लेकिन स्टोर्ड है तब ना, अदरवाइज वो नहीं होगा. और अगर आपको अभी स्टिल कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से ध्यान देना सब लोग. उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिसएडवांटेज ऑफ द फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम एंड एडवांटेज ऑफ द डीबीएमएस. तो आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है. आई एम डूइंग दिस थिंग, आई एम सेइंग दिस थिंग in every semester of the starting of the semester. I am sharing this thing because some students take it lightly कि ये सब्जेक्ट है ठीक है चलो जाने दिया. नहीं, जब प्रोजेक्ट में डेटाबेस कनेक्टिविटी आएगी तब कोई भी प्रोग्रामिंग, जावा .NET कोई भी प्रोग्रामिंग में आपको वहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करना है वो 2-3 लाइन समझ में आ जाएगी. लेकिन डेटाबेस में से आपको क्वेरी फायर करनी होगी तो नहीं पता चलेगा. उस टाइम आपको रिवीजन से नहीं, सब कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा. तो उससे अच्छा बेटर है हम अभी से ध्यान रखें. ठीक है, वहाँ पे रिवीजन कर लेंगे तो चलेगा. ठीक है, ओके, लेट्स मूव. डेटा टाइप ऑफ SQL. as you know, as you have a knowledge of C language, similar way we have a data types in SQL. Most commonly data types are number, character, varchar or varchar2, date, long row and long row. Out of this data type, 3 are the most important, which will be used in all the queries like number, varchar2 and date. These 3 are most important. Yes, Jay.
Yes, Jay Vekaria, you raised the hand. Okay, by mistake. And so let's see. Number, as you know, we can store the number value in that particular column or in that particular variable. अब तक आप वेरिएबल बोल रहे थे, लेकिन अब हम कॉलम बोलेंगे, क्योंकि डेटाबेस में टेक्निकल टर्म्स कॉलम है। ठीक है, ये आपको पता ही है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड में रख रहा हूँ। नंबर एन कोमा डी बिफोर डेसिमल पॉइंट, एन डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डी डिजिट्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है AMT number 5,2. It means in amount column we can store the number before digit 5, decimal 5, and after decimal 2, right? This is number data type. Second one is the character data type. Now in a character data type we can store the character of fixed length. Here maximum limit is 255 character we can store. Similar way, here one example, name character 25. It means you can store your name up to the 25 character long in your name column. Now next, varchar and varchar 2. I will give the difference between varchar and varchar 2. First, understand the difference between character and varchar 2. In a character, you can store only character. In a varchar 2, you can store alphanumeric data. Alphanumeric data, it means number as well as character, because in an address field it requires both. In address field you requires both, like street number, house name, colony name, like this. So you require both. So at that time you can use the varchar 2. Now what is the difference between varchar and varchar 2? There is a thin line between varchar and varchar 2. That is the upgradation. Varchar 2 is the latest version of that data type. In a some platform, it depends on a application, or it depends on a platform, or it depends on a version. In a some version they support the varchar, and a higher version nowadays mostly it supports the varchar 2. Nowadays it supports the varchar 2. तो पहले के जो वर्जन्स थे उसमें varchar, and depends on it may vary from application to application or version to version, but nowadays it supports the varchar 2. Maximum you can store 4,000 characters, right? Next, date. Whenever you want to store any date, like date of birth, date of joining, date of death, you can use the date function. As you know, there are lots of date format. इतना तो जनरल नॉलेज हमारे पास है कि डेट फॉर्मेट कौन कौन सी हो सकती है। मैं थोड़े से नाम बोल रहा हूँ: DDMMYY, DDMONYY, DDMMYYYY, MMDDYY, YY, MMDD. So many date formats are available. Now we have to check which software, which application supports which type of format. ये भी डिफर करता है। So अगर आपको, if you are getting the error in a date, then you should change the format, right? That we have to see on runtime. Next, long, up to 2 GB, you can store the data in a row and long row. You can store your images, pictures as a binary data. To store the binary data, you can use row and long row. As I told you, generally we require 3 data types: number, varchar 2, and date. Number become whenever we are having a amount column, balance column. At that time we are using the number. Otherwise varchar 2 में सब कुछ आ गया ना, number भी आ गया, alphabet भी आ गया, ठीक है? So varchar 2 is commonly used. Now operators in SQL, most of operators you have learned in a C language. Arithmetic operator, plus, minus, multiplication, division. Relational operator is used to compare two operands, two variables, like greater, less than, greater, equal, less than, equal, so on.
Logical operators, it means whenever we have a two condition, at that time logical operator will use or and not. Or it means any one condition must be true, and in AND condition, two condition must be true. Not is the inverse. Now these four categories we have: DDL, DML, DCN, and TCL. Now remember all this short form and full form, because in 1 mark and MCQ in Viva they may ask this question. And in advance, I am telling you, they may ask, write down any 3 command, any 5 commands of DDL, write down any 2 command of DML. Like this type of question will be asked in a short question exam and Viva. So full form of DDL is the data definition language, DML data manipulation language, DCL data control language, and TCL transaction control language. So first we will see one by one. Ritvik is saying the modulus operator percentage is not there in SQL. There is a modulo operator, but it is used for the another purpose, for the prediction, like prediction. We will see that. Okay, I know it's just 1 minute. I know it's 12:11. Don't worry, I will take not more than 5 minutes, because कंटिन्यूशन में मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसलिए डेटा डेफिनेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. जैसे मैंने एक्सेल सीट का सिनेरियो आपको बोला था, और मैंने बोला था कि जो मैं एग्जांपल देता हूँ वो टाइम पास के लिए नहीं दे रहा हूँ, वो कोरिलेट होगा. नाउ कोरिलेट दैट एग्जांपल. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इट मींस whenever we want to create, or whenever we want to define the tables, define the database, at that time these DDL commands are used. For example, यहाँ पे ये कमांड से create, drop, alter, concat, that I will explain in the next lab. But create से क्या होगा, database आपका define होगा, generate होगा, table create होगा. So create, ठीक है. आफ्टर एक्सेल शीट क्रिएशन आप क्या करते हो, कॉलम नेम, रो डेटा सब कुछ इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है. सो इंसर्ट के लिए डेटा मैनिपुलेट कर रहे हो, तो उसमें देखो सिलेक्ट इंसर्ट आ गया, इंसर्ट डेटा. फिर क्या करते हो, आपने कुछ मिस्टेक की तो अपडेट कर रहे हो, अपडेट कमांड डेटा मैनिपुलेशन में आएगा. सिलेक्ट, आपको कुछ फिल्टर लगा के सिलेक्ट कर रहा है तो मैनिपुलेशन में डीएमएल कमांड आएगा. डिलीट भी डीएमएल कमांड में आएगा. तो ये पूरा फ्लो हो गया कि पहले एक्सेल शीट क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर जो डिफाइन होगा वो उसमें होगा. फिर उसके बाद उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करना है, डिलीट करना है, कुछ सिलेक्ट करना है, तो डीएमएल होगा. नाउ डेटा कंट्रोल, डीसीएल, ये मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा डिटेल विद कमांड सिंटैक्स, डोंट वरी. डीसीएल का मतलब क्या, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा को कंट्रोल करने के लिए. कंट्रोल किस चीज का चाहिए, ये एक्सेल शीट में सबको शेयर कर दूं तो आप क्या करेंगे, आप तो जिसका जेंडर मेल है उसको एफ करके फीमेल कर देंगे, फीमेल है उसको मेल कर देंगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो डेटा सीट जो है एक्सेल सीट, उसको ऐसे पर्सन के साथ ही शेयर करो जो कॉन्फिडेंट इट मीन्स कॉन्फिडेंशियली हो, कि ये बंदा, ये पर्सन विल नॉट चेंज एनी डेटा. सो उसके लिए आपको ग्रांट देनी पड़ेगी, एक्सेस प्रिविलेजेस देने पड़ेंगे. सो डेटा कंट्रोल करने के लिए ग्रांट आप देंगे उस टेबल को. और सपोज आपको ऐसा लग रहा है अब मुझे ग्रांट नहीं देनी है ज्यादा, देन यू कैन रिवोक दिस थिंग, ठीक है. नेक्स्ट इज द टीसीएल कमांड, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. तो ये कब कमांड्स यूज होंगे, जब आप क्वेरी परफॉर्म करेंगे. सपोज आपको बीच में सेव करना है तो कमिट करेंगे. अगर कुछ क्वेरी टेबल में गलत फायर हो गई और आपको रोल बैक करना है तो आप रोल बैक कमांड का यूज कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज द 4 कैटेगरीज. वी विल सी दिस कैटेगरी इन अ डिटेल, राइट, इन द नेक्स्ट लैब.
as you know, in a each and every subjects, we are having a 1 hour lab and online session. So let's conclude today's lab. If you are having any query, any doubt, then you can ask. Otherwise, write down your enrollment number into a chat and you may leave. Have a nice day. If you are having any query, you can raise. Just your enrollment number. Yes, Smith Bosania. You have raised the hand. Ask. What is manipulation? Okay, good. Manipulation, it means if you want to, मैनिपुलेशन का सिंपल इंग्लिश में मतलब क्या होता है? चेंज करना या फिर कुछ मैनिपुलेट करना. सो हम टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद डेटा इंसर्ट किया. व्हाइल यू आर इंसर्टिंग, इफ यू मेड सम मिस्टेक, देन वी नीड टू चेंज इट ना. So that is manipulation. So अपडेट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, that is manipulation. Okay, welcome. मोस्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश मीनिंग समझ लो ना, तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब यही होगा. दैट वर्ड्स इज इट्स मीनिंग. सिर्फ टेक्निकल वर्ड हो, टिपिकल टेक्निकल वर्ड, वही आपको नहीं पता चलेगा. उसके लिए तो मैं बैठा हूँ. Okay, rest of the students, if you have pasted your enrollment number, then you may leave. I am going to stop the recording. So before that, you paste your number.